how do you look at the success of this franchisee? People have made Fukre their own. It's like the घर की film. ऑडियंस को कन्विंस कर पाना कि सिर्फ सिक्स पैक एब्स से ही हीरो नहीं होता है. हीरो वो होता है जो कि आपको एंटरटेन कर पाए एंड ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस. सिक्स पैक्स नहीं है या चिजल्ड नहीं है या जॉ लाइन नहीं है या फिर वो नहीं है, वो सब होता तो सब चूचा चूचा नहीं होता. मनजोत का मैंने एक वीडियो देखा था जवान देखने के बाद, वो मन्नत के बाहर जाके वो वीडियो बनाया उन्होंने और कि शाहरुख सर आई लव यू एंड दिस एंड दैट. तो ये शाहरुख खान की जो अभी ये जो रिवाइवल एक तरीके का हुआ है कि मतलब दो फिल्में ऐसी ऐसी दी हैं और अब जो तीसरी आने वाली है तो लग रहा है कि वो शायद इन दोनों से भी बेहतर होगी. He's inspired millions and millions of people like me. I'm one of those. You know, हमने सिर्फ सोचा था, मैंने और सिर्फ सुना था बचपन में कि यार थिएटर में ना सिक्के उड़ते हैं. मैंने पहली बार ये फिनोमेना ये खुद अपनी आंखों से विटनेस करा. ये भी एक चर्चे हैं इस बात के कि दैट अली फजल आपसे नाराज हैं. अली फजल नाराज है? Hey guys, this is Varun Sharma. You're watching me on Connect FM Canada with Faridoon. Stay connected. वरुण शर्मा, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा. कैसे हैं आप? Very well. आप कैसे हो भाई? So good to see you after so long and hope you're doing well. I'm doing amazing and congratulations to you. फुकरे 3 आई थिंक तीनों फुकरे में से सबसे ज़्यादा ये कामयाब ऑलरेडी हो चुकी है एंड आई थिंक इट्स ऑल गन्स ब्लेजिंग. तो 100 करोड़ तो क्रॉस करेगी जल्दी. उसके कितना आपको लगता है? We just got an update. We just putting it out there. We just 100 crore worldwide today. So hoping that also happens soon. But worldwide, it just happened today only. We just surpassed that mark. अमेजिंग. सो वरुण, मैंने यहाँ पर मैं सरी में हूँ, वैंकूवर के पास में. तो मैंने यहाँ पर मैंने पिक्चर देखी एंड पीपल वर लिटरली चकलिंग एट सो मेनी सीन्स. हाउ डू यू लुक एट द सक्सेस ऑफ दिस फ्रेंचाइजी and the way people have taken to it? I think it's the amount of love because we've also been doing the theater rounds. We've been visiting the cinemas. You know, the reaction that we've been getting is so beautiful because obviously there was an expectation for the people who loved Putri Ram, and then there was an expectation from the second one. Then obviously the expectation all the higher hogi and then the third one. So we were also kind of a little like pressurized and we were also like kind of had those jitters and butterflies that we hope that we match that expectation. But hopefully with the grace of God, we've kind of matched that and kind of surpassed that. The reaction has been beautiful. And I think the biggest trend is, you know, people have made Fukre their own. It's like the ghar ki film, you know, and the ghar ke kirdar and the ghar ka thing. So I think that is the biggest thing that's happened with Fukre. And as actors, I think it's the biggest blessing that we've got. That they've made us. ओके, सो मैं आपके मैं इंटरव्यूज़ में देख रहा हूँ और मुझे इतनी खुशी मुझे हुई बिकॉज क्या होता है कि जैसे शेक्सपियर ने एक बड़े कमाल की बात कही है कि अ फूल डथ थिंक हिमसेल्फ टू बी वाइज बट अ वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल. सो अगर आप सही मानों में अगर आप अक्लमंद हैं, समझदार हैं, तो आप इस चीज़ को आप प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे कि आप बहुत अक्लमंद हैं, विच इज़ आई थिंक समथिंग दैट इज़ कमिंग अक्रॉस इन योर कॉन्वर्जेशंस. And the fact that you don't take yourself too seriously, you have learned from छिछोरे का जो थीम था कि प्रेशर को ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर नहीं लेने का एंड enjoy करने का, एंड the fact that you want to give happiness to people and have them like a good entertaining time. ये इतनी सारी समझदारी इतनी कम उम्र में आई कहाँ से? ये बहुत ही झटकोटे से गाड़ी सर. और वैसे आई थिंक 10 साल के एक्सपीरियंस में, 10 साल की यू नो पब्लिक डीलिंग में, 10 साल के एक्सपोजर में यू गेट टू लर्न अ लॉट एंड दैट्स व्हाट इवन आई फॉलो. आई थिंक in life जो भी हम problem होती है और whatever it is, there is nothing that cannot be resolved. You know, there is nothing which cannot be resolved. So might as well enjoy the process even of the dark shade that is happening in life, or of if you're stuck in a particular situation and you're getting stressed about it, might as well enjoy that process also, because there is no point just being stressed and being worked up about it and affecting your own health and the people around you. So that is my approach that I've been taking, and this is something that I've learned from my mother and my sister, that you know, just to be content and be happy in whichever situation you are and just live it through. I mean, that's the way
it is, and that's how I've been following with the grace of God. It's nice, and every day is a better day. Every day is a much happier day when you start taking things a little easily on your own self. ऑलराइट सो अब जैसे अगर हम फुकरे की बात करें तो यू आर द मेन लीड, प्रोबेबल मेन लीड, बिकॉज द फिल्म इज सेंटरिंग अराउंड यू. लेकिन अब जैसे मेन लीड है और उसमें इस तरीके का अपने आप को लाइटली लेने की सलाहियत होना कि दैट मैं 4 महीने से मैं प्रेग्नेंट हूँ एंड यू नो नॉट नॉट not being too bothered about the fact that he's not having the six pack abs, proverbial six pack abs जो कि एक हीरो में होना चाहिए types, but still he is appealing and charming and भोली पंजाबन falls for him and so does Mombasa. तो ये जो एक एबिलिटी होना, एक कॉन्फिडेंस लेवल होना और ऑडियंस को कन्विंस कर पाना कि सिर्फ सिक्स पैक एब्स से ही हीरो नहीं होता है. हीरो वो होता है जो कि आपको इंटरटेन कर पाए एंड ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस. I think, bhai, as you rightly said, Fukre as a franchise, as character, it's a beautiful story of all the Fukras. If you see that all the characters in the film, all the whether it's Lali, uski ek alag traits, and that's what people are attached to. Honey is that smart guy. He is that guy who's there. Pandit ji is the different, who's the sensible one who kind of has that knack of things and all that. And Chucha is this carefree, happy-go-lucky, who's always making his friends land up in trouble. What I feel is, as you also mentioned, like a hero and everything. I think it's now with Fukre, with in fact all the Fukras what's happening is that there is a chucha in every group. You know, there is a chucha in every group. There is a honey in every group. There is a lali in every group. There's probably a bholi in every group where someone's like kind of scared of the person and kind of doing something. There could be a panditji in a form of a tayaji or a mamaji or a masterji or an elder brother or someone who's kind of taking out these boys or the group out of the troubled situations. So the fact that it is so relatable that you find your own friend or your own cousin or your own, acquaintance on screen, the relatability factor is what makes the characters, uh, you know, मतलब जो प्यार आता है या वो चीजें आती है उनसे आई थिंक इट इज दैट रिलेटेबिलिटी फैक्टर बट एट द सेम टाइम आई बीन आस्क्ड अ लॉट अबाउट कि सिक्स पैक्स नहीं है या चिजल्ड नहीं है या जॉ लाइन नहीं है या फिर वो नहीं है वो सब होता तो सब चूचा चूचा नहीं होता वो अगर सिक्स पैक होते तो चूचा चूचा नहीं होता सिक्स पैक एब्स होते तो प्रोबेबली सेक्सा सेक्सा नहीं होता इट इज द इम्परफेक्शंस दैट मेक द कैरेक्टर परफेक्ट it is the imperfections that makes the characters like lovable and relatable and your own so that's the thing and I'm really happy and I feel really blessed that there's an acceptance for that and there's so much of love from the audience for that and that's something that it'll open more windows for a lot of people like probably my gap tooth smile. I've been told so many times, "Kya tu fill kyun nahi kar raha tha? You have a gap in your teeth. You're an actor. Why don't you?" It is these imperfections that make the characters kind of perfect and give that side to it. So I don't want to fall into that whole thing. Everyone needs to be like that spick and span, perfect, person like that. Imperfections can also land up, getting love from a lot of people because everyone's not perfect. Everyone has something or the other which is there, and that's how it's okay to be imperfect at times. Is what I feel. No, I think that once again that is a sign of wisdom to say that. And all right, so because हम हमारे पास अमोल पालेकर साहब का एग्जाम्पल है और भी एग्जाम्पल हमारे पास में है. अमोल पालेकर साहब was the only hero when बच्चन साहब was at its peak. और अमोल पालेकर साहब की 8 फिल्में जो हैं वो बैक टू बैक जो हैं वो कामयाब हुई थी. They were hits actually, and so it's not, and he was a very regular hero, and that too when Bachchan Saab was at its peak. So Varun, और भी एक बहुत बहुत ही आई थिंक दिलचस्प चीज़ होती है कि दोनों आप बहुत ही ओवर्टली कॉम्पिटिटिव नहीं है एंड दैट इज़ वाई जो भी रीज़न है आप यू आर अ वेरी लव्ड पर्सन विद इन द फिल्म इंडस्ट्री एज वेल. इवन विद इन द आपकी जो टीम है फुकरे 3 की, मनजोत का मैंने एक वीडियो देखा था
जवान देखने के बाद वो मन्नत के बाहर जाके वो वीडियो बनाया उन्होंने, और कि शाहरुख सर आई लव यू एंड दिस एंड you guys were coming right at the when the Jawan wave was literally going hammers and tongs. And still you guys proved to be a huge success as well. And the trailer of Fukre 3 came in with Jawan 2. So ये एक एबिलिटी हो पाना कि एक सही मानों में जेन्युइन दोस्तियां रख पाना, बिकॉज मैं आपको बहुत सालों से मैं आपको जानता हूँ, एंड आई ऑलवेज मैं पहले फुकरे से मैं आपको मैं जानता हूँ, और जो एक एबिलिटी आपके अंदर है टू बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग, to be respectful and courteous, at all points of time, which is a very endearing quality. ये आई एम श्योर कि अब मैं आपके इंटरव्यूज देख रहा था, आपकी मदर बहुत हद तक जिम्मेदार हैं इसके लिए, लेकिन फिर भी एक डू यू फाइंड इट लाइक इट ऑल्सो पेज टू बी योर सेल्फ. You don't have to be someone else. You don't have to be overtly competitive and gossipy to move ahead in life. I think, Faridoon bhai, being competitive is very important, but being competitive in the right manner, in the most healthiest manner, is uttermost important. According to me, and I think at the end of the day, one basic thing everyone should have and everyone should kind of give to each other is respect. I feel it's everyone as a human beings amongst ourselves. Giving respect is should be as equivalent to as breathing. You have to respect the other individual, and you have to be nice to human beings. At the end of the day, work, XYZ, whether it's acting, whether it's entertainment, whether it's textiles, whether it's pharmaceutical, whether it's anything, work will happen. Everything will happen. But once you need to, मेरे लाइफ का सिंपल फंडा है, अगर मैंने किसी से गलत बात कर दी या फिर मैंने किसी के साथ गलत कर दिया, मुझे रात को नींद नहीं आती. क्या बात है. To me, the most important thing in life is to go back to sleep in peace at night. If Wow. I do, it troubles me and I can't sleep at night properly. So it's a conscious effort right from my childhood just to spread that happiness and spread that love and being nice and giving that respect. And it just became an inbuilt thing now. And in the industry, there are so many people, like there are so many friends I have who are like family, whether it's Kriti, whether it's Varun, whether it's Dino Bhai, whether it's Ranveer, whether it's there are so many people that like I've kind of worked with and who are like family to me and all that. It is totally on the bond of love and respect and friendship that obviously has gotten stronger and stronger in this years of time that we've been friends together. But I think so that respect is one thing which is the uttermost thing, and that there's at the end of the day, आप कोई भी स्टैचर पे कोई भी इंसान है, वो है इंसान नहीं. I don't know if you're getting what I'm trying to नहीं say. नहीं, you're saying it beautifully. You're saying it beautifully. Yeah. लाइक आप किसी से भी काम कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, तो वो इंसान है ना. मतलब आप कोई और कोई फोर्स है, तो आप डर नहीं रहे हैं या फिर आप वो नहीं हो रहे हैं या फिर कोई छल कपट नहीं हो रहा है, कुछ है तो इंसान है ना. सो इट्स एज मच एज यू, इफ यू डिजर्व रिस्पेक्ट, the other person also does, like deserves respect. If you think you don't do it and if you're not giving out respect, that's a separate scenario altogether. But you can't expect कि आप मुझे सारी respect दो लेकिन मैं आपको नहीं दूं. It doesn't function. So that's my thought. No, we have had so many conversations, और कभी भी देखिए बहुत बार क्या होता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बहुत बार इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू के बाद में एक्टर्स होते हैं अपना मस्ती मजाक में जो है वो अपना इधर उधर की बातें होती हैं, एंड दे एंड अप गॉसिपिंग एज वेल अबाउट अदर एक्टर्स एंड everyone else as well. But you have never done it. You have never ever indulged in small talk of any sort, which is really commendable. All right, so मैं ये भी एक मैं देख रहा था आपके एक इंटरव्यू में कि आपका जो एक स्टार्टिंग पॉइंट था वो मतलब ज़िंदगी का वो ताली ताली आंखों से हुआ है, और जी. शाहरुख खान खां से आपके एक इंस्पिरेशन से रहे हैं. तो ये शाहरुख खान की जो अभी ये जो रिवाइवल एक तरीके का हुआ है कि मतलब दो फिल्में ऐसी ऐसी दी हैं, और अब जो तीसरी आने वाली है तो लग रहा है कि वो शायद इन दोनों से भी बेहतर होगी. कैसे देखते हैं आपको, आपने मतलब फिल्म इंडस्ट्री के जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसमें इस तरीके का फिनोमेना आज तक देखा आपने? I think, sir, matlab Shah Rukh sir is he's inspired millions and millions of people like me. I'm one of those. I'm a hardcore Shah Rukh sir fan, and as you rightly mentioned, it was ye Kali Kali Aankhein, it was Bari Jigar.
initiated the seed of becoming an actor in my head and in my soul. So he's always been an inspiration. He's always been my role model. And I was fortunate enough, and I feel really blessed that I got a chance to work with him in Dilwale. And 2023, when you see the phenomena of Pathan, of Jawan, it is so beautiful because हमने सिर्फ सोचा था, मैंने और सिर्फ सुना था बचपन में कि यार थिएटर में ना सिक्के उड़ते हैं जब एंट्रीज होती है और जब एक सीक्वेंस होता है, तो जब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं तो सिक्के उड़ते हैं वहां पे। मैंने पहली बारी फिनोमेना ये खुद अपनी आंखों से विटनेस करा। So it was such a beautiful feeling to I get goosebumps when I'm talking about it right now because Pathan ke time pe bhi when we were shooting and I was in Gujarat, and when I saw Pathan that time, I literally saw, we went into for the afternoon show. We went for the afternoon show. It was a packed show and people were like hooting and cheering and doing everything, and I've seen sikkas flying on the screen, that thing, and I've only heard this is the first time that I witnessed it, and it was so beautiful. And the same thing for Java. And I'm sure, I'm really hoping and rooting for it, that really looking forward to Donkey now. I think Donkey again is gonna storm the box office, and I think it's really gonna nail it. And I think Shah Rukh sir is like a phenomena. I think it's I think he's an emotion which is like, as blood runs in our body. That's the way Shah Rukh sir, I think, runs in our body. It's so embedded in us. ओके नाउ जैसे आपने थोड़ी देर पहले आपने सेक्सा के बारे में बात करी, छिछोरे के बारे में आपने बात करी। पिछले कुछ सालों में हमने डिस्कशन हमने सुने हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। बहुत से लोग शायद बात नहीं करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि भाई आदमी अगर मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, तो फिर उसको मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ कैसे हो सकते हैं, विच इज़ द मोस्ट अनएजुकेटेड रिस्पॉन्स। बट वीव हर्ड मैनी सच रिस्पॉन्सेज इन द रिसेंट टाइम्स। आपके करियर में भी उतार चढ़ाव रहे हैं। you've had hits, you've had films that have worked. आपने कैसे डील किया है ये जैसे इस वक्त आप एक एस्टोनिशिंग कामयाबी आप महसूस कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम जब फिल्में नहीं चलती हैं, हाउ हैव यू कम टू टर्म्स विद इट? आई थिंक सर एक बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है जो मैंने फॉलो करनी स्टार्ट करी और मेरी लाइफ में उस चीज में काफी परिवर्तन आया। हमने आज के टाइम पे, मेरा नजरिया ये है कि हम फोन से ज्यादा और इंसानों से कम बात करते हैं। मैंने सिर्फ इतना चेंज करा है कि मैं फोन से कम और इंसानों से ज्यादा बात करूं, सब सॉर्टेड, without exaggeration. It is not a very big thing, or I do this, I do this, I don't want to talk anything बड़ा बड़ा, because मैं वो चीजें करता नहीं। आप जितनी आप फोन से बात करते हैं, आप इंसानों से कम बात करेंगे, उतना ही आपका स्ट्रेस पॉइंट्स कम होंगे, उतना ही आप खुल के इमोट नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपने फोन से कम और इंसानों से ज्यादा बातें करने स्टार्ट कर दी, आधी चीजें वैसे ही रिजॉल्व हो जाएंगी। ये मेरा फंडा है, सिंपल। ये भी एक चर्चे हैं इस बात के कि दैट अली फजल आपसे नाराज़ हैं। अली फजल नाराज है? जी, तो उसका उसका रीज़न बेसिकली जो सुनने में आया है वो ये है कि वरुण शर्मा की जो केमिस्ट्री ऋचा चड्ढा के साथ में है, इट इज़ फार मोर क्रैकलिंग देन वरुण शर्मा एंड अली फजल एंड ऋचा चड्ढा। अरे no, बिल्कुल मेरी, आई थिंक इनफैक्ट when we were watching the film, Ali was with us. उसको बहुत फोमो हुआ था पूरी शूट के दौरान, बहुत ज्यादा फोमो हुआ था उसको पूरी शूट के दौरान। We used to keep video calling him when we used to, so we, as a Fukre gang, we've had this fest of eating all throughout, and the head of that is Pulkit Samrat. He loves to feed, he loves to feed and love making everyone try new cuisine। कोई भी शहर में होते हैं, वहां की जो भी अतरंगी और बेस्ट कुजीन होती है वो पुलकित को पता होती है और वो आ जाती है। एंड सो दिस इज बिन कंटिन्यूएशन राइट फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म। 2012 से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है और अभी तीसरे तक भी वही है। जब भी हम कुछ इंटरेस्टिंग खाना खाते हैं, कहीं पे हम बैठे होते थे, तो वी यूज्ड टू कॉल अप अली, वी यूज्ड टू वीडियो कॉल हिम एंड वी यूज्ड टू गिव हिम लाइक मेजर, but he saw the film with us and he was like really rooting, and and I think चूचा और भोली की केमिस्ट्री अच्छी तो है, लेकिन 10 साल हो गए वो उससे पीछे पड़ा हुआ है। आई होप अब चौथी में मान जाए। No, I think the chemistry is outstanding. I think Richard Chadda is in a different zone in this character because I find her so entertaining.
और या रिचा रिचा ने बहुत सी फिल्म, बहुत हर तरीके की फिल्में रिचा ने करी हैं। और इवन आई थिंक मतलब पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं। नहीं नहीं, वो बहुत इजी है। रिचा फरिदान इज मोस्ट इजीएस्ट पर्सन, एंड द वे, एंड यू हैव टू सी हर goofing around. No, It's no, so the way she cracks I'm jokes and all kidding. is next level. No, I'm kidding, but I think she's so entertaining in this character. I think she goes into a different zone altogether. And she's looking so good. वो शादी के जो attire में, I thought she looked beautiful. Yeah, she She looked looked. a beautiful bride. And Yeah. it's a very tough character to pull off, like Goli Punjaban, right from the start. It's got that shades, it's got that shades of being this boss lady. It's got that gray shade in her. It's got that chalaki. Yet the softness, that soft corner that comes whenever Chucha's around, because she's amused by his stupidity. She as a character, she's like amused ki okay, and then she also has to portray, or she genuinely loves the character of Chucha. So you can't really make out that is it for real, is it like pretentious, is it for her own benefit, या फिर ये है भाई कि इसको एक्चुअली में भी है। तो हमें भी 10 साल में अभी तक वो चीज समझ नहीं आई है, समझ नहीं आया वो Amazing. कभी।